हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके पहले हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में भी बात की है, तो आप उस चैप्टर को नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के देख सकते हो। और साथ ही हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि हमारा मोटिव है आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट एजुकेशन पहुंचाना। और आप इससे जुड़िए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। चलिए आज शुरू करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल कवर अबाउट डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, द कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। चलिए, कोई भी डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि व्हेन इट इज अ डायरेक्ट स्पीच द सेंटेंस वी हैव फर्स्ट हु इज स्पीकिंग and then we have the inverted commas saying what is being said. Okay, Neha said I am on a trip to Goa. क्या हुआ यहाँ पे? पहले हमारा सब्जेक्ट आया नेहा, नेहा ने कहा तो नेहा said, then it is a comma, then we have inverted commas, double inverted commas, and the जो उसने कहा that is being wrote in here. Okay, Ram said Hanuman you are my brother. Geeta says to Hema टुडे इज अ ग्रेट डे। अब इसने किसको कहा ये भी हमारा फर्स्ट फ्रेज पे आ गया, और उसके बाद हमने ये बात कही। ठीक है, these are the direct speech. In direct speech, they reported what a speaker said without the quoting the exact words. Quotations नहीं होते, we बस just said कि उसने ये कहा। Neha said that she is on a trip to Goa. Said that. What we added instead, not the inverted comma, we used that. Okay. Ram said that, again that. Okay, no quotations, just says that. Okay, clear how it is being written? Now direct to indirect. अब ये चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? ध्यान रखो इसमें कि inverted commas are not used for reported speech if it is generally introduced by the conjunction that. If that ये use करते हैं indirect voice में, ठीक है। कॉमा रिपोर्टेड स्पीच में होता है, डायरेक्ट स्पीच में होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम कॉमास भी नहीं यूज करते, इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं यूज करते। क्लियर? और टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। आई से रीना इज अ स्टूडेंट, आई से दैट, इट्स ऑल सेम, बस वी यूज दैट एंड रिमूव द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। सिंपल। ही सेज शी इज अ नर्स, ही सेज दैट शी इज अ नर्स। I shall say Ayush is a doctor. I shall say that Ayush is a doctor. Clear है कैसे हमने direct से indirect किया for the same sentences? Raghu said it changed. It changed to Raghu asked to me. You की बात हो रही है, to me if I take it. Question है इसलिए हम यहाँ पे if लगाए। ठीक है। Exclamatory. He said what a great match. He exclaimed. अगेन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था इसलिए वी यूज्ड exclaimed. What a great match it was and added it was. Okay, exclaimed या shouted. Now we have some sentences. Write into passive voice. That is the indirect speech. Write into indirect speech. Mohan said, I love solving puzzles. Mohan said that he loves solving puzzles. You must hurry up, said mother to Mohan. Our mother asked Mohan to hurry up. Ramesh said to his father, Ramesh asked his father, because last में ये asked हो रहा है, so asked his father about where they are going. Captain said to his team, Captain asked his team to be alert and play well. समझ आया? क्लियर हुआ कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से काफी सारी चीजें हैं that we can explore and write about. चलिए, आप हमको इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को प्लीज शेयर करो, उनको भी बताओ दैट देयर आर so many fun videos that you can just spend few minutes in a day and learn so much more from them. So please stay updated, subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss any video update.